सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारे होठों की सुर्खियों से, तुम्हारे होठों की सुर्खियों से वफा की शबनम झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। कसम खुदा की यकीन कर लो, कसम खुदा की यकीन कर लो, कहीं भी ना होगा हुस्न ऐसा। न देखो ऐसे झुका के पलके, न देखो ऐसे झुका के पलके, हमारी नीयत बहक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है।
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचना भस्मांगरागाय जटाजूट कंठ सोहे कालकूट तीन नयन चंद्रभाल कंठ में रुद्राक्षमाल जागो महिमा पार जागो महिमा पार जागो महिमा पार पड़ा आज संकट में है प्यार मेरा संकट में है प्यार मेरा सुना लगे हार सिंगार मेरा तुम्हारे ही हाथों में संसार मेरा कहूँ काट जो तीर तुम हीन पहचानो मानो अगर प्रीत मेरी है सच्ची तो फिर मैं समाधि तुम्हारी गिरा के रहूंगी समाधि तुम्हारी गिरा के रहूंगी मैं आज अपना बना के रहूंगी तेरे सोए मन को जगा के रहूंगी जगा के रहूंगी Mr. President, friends, we have many institutions and organizations in our country, and today we see the birth of yet another. And yet, perhaps it will not be redundant or be a duplication of work, because we find that in spite of our wishes, in spite of the clear direction which was given to our party from the very beginning, the concepts of democracy, of socialism, of secularism are not yet clear in the minds of our people. It was after considerable consideration that we chose the path of democracy. Not because it is the quickest path, perhaps it isn't, but because it is the path which helps the people to grow to political maturity. And we felt that that was most important for our people. For them to feel involved in what is happening in the country, to participate in the development of the country, this can only be done if they have certain choices open to them. And this is a system which gives them that choice. What can be more easy in a country like India to arouse people emotionally with slogans of religion, with slogans of language, or with other regional interests? And these are some of the matters which come in the way of our progress and of speedy development. We are a country steeped in tradition. Can we really be democratic unless we sweep away some of that tradition which is not relevant to the life of today? But we find how many of our functions, how much of our time goes in something which has happened long, long ago. I have nothing against the religious functions of people.
But how much time can we spend remembering something that happened thousands of years ago, or maybe did not even happen in the way we think it happened? So much of it is looking back. Even our national leaders, they are great leaders. They have inspired us. They have brought the country forward. They have given us independence. But the new generation has to go forward. It cannot keep looking back, however great a person was. But so much of our energy goes in observing festivals and other things, looking backwards. You cannot look backward and go forward. You have to make up your mind which you want to do. There can be no democracy if you're looking backwards. There can be no democracy if you have a communal outlook and you have false barriers between men and men, citizen and citizen. There can be no democracy if you do not have socialism. Because democracy and inequality cannot coexist. We talk of socialism, of equality, but we almost always think of it merely in terms of the economic program. Can there be equality if one says this man cannot drink where I am drinking? This man cannot sit with me where I am sitting? It doesn't matter what economic programs you have. If this situation continues as we have in parts of our country, you can't have democracy, no matter how well your parliament or your assembly work. So these are some fundamental matters to which we have to give thought, and I'm sure that this institute, which is beginning, will go into the depth of many of these matters and try to educate public opinion so that more and more of our people not only think about these things, but make up their minds to act. हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गए हम मगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है नाजुक कली से फूलों से, ये न टूटे ख्याल रखिएगा। और अगर आपसे ये टूट गया, जान जाओ इतना ही समझिएगा। फिर कोई बावर मोहब्बत की अपनी जुल्फें नहीं संवारेगी। आरती फिर किसी कन्हैया की, कोई राधा नहीं उतारेगी। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ।
मला न कळले, तुला न कळले, मला न कळले कसे प्रीतीचे धागे जुळले, कसे प्रीतीचे धागे जुळले, तुला न कळले. ते डोळ्यांचे पहिले मिलन, ते पहिले मित ते संवेदन, शब्दाहून ते गोड मुखेपण, शब्दाहून ते गोड मुखेपण, कसे कळे ते फुल फळले, तुला न कळले, मला न कळले, तुला न कळले, मला न कळले कसे प्रीतीचे धागे जुळले, तुला न कळले. थोडी लज्जा थोडी भीती, ओढ अनावर आतुरताती, थोडी लज्जा थोडी भीती, ओढ अनावर आतुरताती, कशी जागली हृदय प्रीती, कशी जागली हृदय प्रीती, कसे मनातून विसंगले, तुला न कळले, मला न कळले, तुला न कळले, मला न कळले, कसे प्रीतीचे धागे जुळले, तुला न कळले. बसला जरा होता पहिला, काळ थांबून उभा राहिला, बसला जरा होता पहिला, काळ थांबून उभा राहिला, कणा कणातून वसंत फुलला, कण कणातून वसंत फुलला, तुम्ही कुणाला कसे जिंकले, तुला न कळले, मला न कळले, तुला न कळले, मला न कळले कसे प्रीतीचे धागे जुळले, तुला न कळले. माझ्या संसाराला